प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धदिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। नवरात्रि खुशियों का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द का अर्थ होता है नवराते। इन नवरातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति रूपी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा होती है। इस त्यौहार को पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह मेहनत से जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न है। यह बुराई पर अच्छे की जीत का जश्न है। The festival of Dashera originates from the great Hindu mythological epic Ramayana, which says that the 8 incarnations of Lord Vishnu, Lord Ram, the personification of righteousness and justice, killed Ravan, whose 10 heads were the symbol of 10 evil qualities. On the way to save Sita, who had been kidnapped by Ravan, Ram prayed to Durga to seek the blessing of goddess of courage and power. Lord Ram killed Ravan using Brahmastra and won over the evil. To commemorate this day, Vijayadashmi or Dashera is celebrated. In this pandemic, we struggle a lot against the modern day evil that this virus is. Just like Ravan had 10 heads that kept on sprouting one after the other, this pandemic too challenged the human race with a lot of unexpected circumstances one after the other. Not being able to meet our loved ones, financial crisis, mental stress, extended working hours, over dependency on gadgets, unemployment, food supply scarcity, stunted GDP growth were just a few of the many. But just as we should, we bounced back and fought with all that we had to bring things back to normalcy. After the worldwide struggle that lasted more than a year and a half, after encountering the most unexpected of the situation and dealing with them, we finally found our Brahmastra, our vaccine. We are healing and a normalcy is returning. With schools reopening all over the country, we can truly call it Vijayadashmi this year, celebrating our victory over the crisis.